2024 का अंत आ चुका है और इसलिए मैं आप सबके साथ अपने टॉप MFN के फिनिशेस शेयर करना चाहता हूं, स्पेसिफिकली टॉप 3 फिनिशेस। मेरे 3 क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं अपने फिनिशेस। सबसे पहले द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दैट फिनिश, बेसिकली कितना हाई लेवल कंपटीशन था और किसके अगेंस्ट था। बेसिकली अगर बहुत अच्छा लेवल ऑफ कंपटीशन था, मे बी इट गॉट दिस फाइटर क्लोजर टू टाइटल फाइट। सेकेंडली द टेक्निक, जैसे कि आप जानते हैं कितना क्लीन फिनिश था, ऑब्वियसली उससे हमें पता चलता है कि फाइटर की टेक्निकल एबिलिटीज कैसी है। एंड थर्डली द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, ऑब्वियसली लॉट ऑफ नॉकआउट्स एंड फिनिशेस इस लास्ट ईयर में कहीं से भी एकदम से आए थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थे हम सबके लिए, स्पेशली MFN 15 में। तो ये 3 क्राइटेरिया है जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया। तो सबसे पहले मैं आपसे अपना टॉप नंबर 3 फिनिश शेयर करना चाहता हूँ इस साल में, और वो है नीरज पंगाल वर्सेस अभिषेक राणा। Again tries to get the takedown by Abhishek. बाय द वे मेरे को कमेंट करना पड़ेगा, ये बहुत क्लोज फाइट थी इससे पहले। अभिषेक राणा, अ वेटरन हुज अ जूडो प्लेयर, उन्होंने अपनी रिटर्न की थी ये नीरज पंगल के अगेंस्ट, और ये नीरज पंगल की सेकेंड फाइट थी इस ईयर में। अप अंटिल दिस पॉइंट, क्योंकि साउथपॉ थे, इट सीम्स ही वाज गिविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू नीरज, बट एज यू कैन सी अभी हम बस देखेंगे हाउ नीरज गेट्स द फिनिश। लाइक साउथपॉ जैब जो अभिषेक राणा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, मेरे हिसाब से काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा था। इट वॉज अ स्टिंगिंग जैब एंड अनएक्सपेक्टेड आई गेस फॉर नीरज, बिकॉज एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग अभिषेक राणा टू बी थोड़ा सा वॉश्ड अप, बट ही एक्चुअली लुक प्रीटी गुड। तो देखोगे he was cornering with the jab, and Neeraj was mixing it up, trying to go for takedowns and even landing his own jabs and some stiff shots. But first round में he got hit with some stiff shots and you could see his body get stiff. Again tries to get the takedown. Tried to reverse by it, Abhishek breaks just away. beautifully slips out of that. अब देखना. So he slipped a left, straight left, beautiful slip, and lands his own 2-3. Yeah. Yeah, beautiful. एंड देन मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द प्रोडक्शन, आई गेस दे शुड हैव कट टू इट बेटर, क्योंकि आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू हिट हिम रियली हार्ड। नीरज वाज ट्राइंग टू लैंड अ बिग ग्राउंड एंड पाउंड शॉट, एंड मे बी दैट्स व्हाई ही केम डाउन विद मोमेंटम एंड स्लिप्ड। ये भी हो सकता है कि अभिषेक ने उसको मारा हो, बट हमें दिख नहीं रहा है किसी एंगल से। आई एम नॉट एबल टू कंफर्म। ओके, ही गेट्स अप. Abhishek tries to land an uppercut. I don't think that lands. Okay. And then, as you can see, अभी southpaw में shift हो गया है नीरज, ठीक है? This is a wild sequence. And from here, he'll step into his orthodox stance, and while doing that, he'll throw a jab, which really hurts Abhishek, ठीक है? And basically sends him down to the ground almost. Yeah. Brutal finish. Brutal finish. एंड ऑब्वियसली यू हर्ड द कॉमेंटेटर से कि क्या ये इलीगल था? इलीगल नहीं था. अभिषेक्स हैंड्स weren't on the ground even with the old rules. This was illegal नहीं. So kudos to Neeraj for this finish. This came out of nowhere, to be honest. तो had everyone off their seats. All right. मेरे हिसाब से ये मेरा टॉप 3 में से थर्ड नंबर पे है फिनिश इन MFN 2024. All right. The second most impressive finish in 2024 MFN में मेरे हिसाब से was अर्शियन मेमन्स फिनिश अगेंस्ट गोविंद दाले. बहुत ब्यूटीफुल फिनिश था. आप सबको जरा मैं रिप्ले एक बार दिखा देता हूँ and then we can sort of analyze it, ठीक है? Dale here. Again, nice. Oh! No, hang on, he recovered. This could be it. He's got the choke. Hang on. Oh! Wow. Yeah. So basically this was the second most impressive finish according to me. अगर आप ये sequence देखोगे, it's actually pretty wild. I would say up until now, Arshiyan was getting the better of Govind Vesebi. He was pressuring him better. Maybe not landing the most hard shots, but he was up in volume, in my opinion. ठीक है? And यहाँ पे आप इस sequence में देखोगे, sort of shows Arshiyan's chin also, because if you didn't notice, he first ate a head kick. So Nice leg kick by Govindale here. Again, so he eats that head kick. He was late. उसको डिफेंस ऊपर लाने में थोड़ा लेट था. Eats that head kick. But इसने इतना ड्रिल कर रखा है, इतना ब्यूटीफुली. And by the way, if you can't notice, like if you didn't notice, Arshiyan is southpaw, so he defends it with his backhand. And before even Govind has returned that kick, he already throws that right hook. oh, nice. Yeah, it's a left hook and then a right hook, and you can see like मुझे समझ नहीं आया भाई कितनी ज्यादा पावर है. Nice leg kick by Govindale here. Again, nice. Look at that, because like the punch that he throws literally suspended Govind in the air. यार वो देखो पूरा पलट गया भाई. Like very impressive. No, hang
I mean, some people could have a problem with the stoppage later क्योंकि maybe Govind wasn't completely out, but in my opinion, I think Herb Dean made the right call. जिस तरीके से Govind fell down and how Arshan was already on his back and ready to ground and pound him or even probably submit him, I think it was the right call because the way he fell down was quite scary. But very impressive finish by Arshan. Like he is 7-0 now and all finishes. So expecting big things from Arshan. Alright. Now when it comes to the final, अब जब फाइनल एंड टॉप फिनिश की बात करें मेरे हिसाब से मैंने इसको इसलिए चूज किया क्योंकि ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत टैक्टिकल फिनिश थी showed a lot of planning and strategic figuring out your opponent in the very beginning and मेरे हिसाब से the best finish that I seen this year both excitement wise and even strategy wise was Aminder Bish's finish against Arsenba Ozukom. अगर आपको पता नहीं है white वाली shots है उसमें Aminder है and the green shots is Arsenba. You can see Aminder Bish is looking to take this fight to the ground. Ozgum certainly has the speed and strength advantage while standing. बहुत अच्छे तरीके से अपना होमवर्क करके आए हैं अमिंदर बिष्ट और ये Huge right hand! What a counter! No doubt, guys. सच्ची में like this is one of the most beautiful knockouts I've seen, like finishes I've seen this year. इसको अगर break down करेंगे, मैंने comments में भी काफी देखा like obviously Aminder Bish अगर आप सबको पता नहीं है comes from Angad Bish's camp, Mutant MMA. Arsenba Ozukom is also one of the good strikers that we have in our country. Unfortunately, he's like on a losing streak right now. Very intimidating, heavy low kicks, heavy. He's a very good kicker, powerful kicker. अगर आप इस फाइट का फर्स्ट राउंड देखोगे there were quite a few heavy kicks that he landed on Aminder and Aminder was trying to counter him but the thing is कि everyone's focusing on the fact that yes कि Aminder had come ready to counter his low kicks ठीक है but अगर आप finish देखोगे ना it's very different. The finish Aminder doesn't counter a low kick which is the back kick. Aminder counters a switch kick, front switch kick. और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मेरे हिसाब से Arsenba ने गलती क्या की जिसकी वजह से Aminder was able to capitalize because इससे पहले भी low kicks तो मार रहा था Arsenba but Aminder still wasn't able to find the timing. I'll show you the exact reason because of which Aminder was able to find his timing for a switch kick and then counter him. अब जरा देखते हैं finish sequence ठीक है आप ये देखो. So obviously you can see Aminder is heavy leaning forward on his front leg ready to counter because obviously एक point के बाद आप इतनी leg kicks खा सकते हो you will have to step into range to counter them otherwise you will have to step out of range and when he's so much behind the cage वो tough हो जाता है right so he's ready to counter. He's heavy on his front leg ठीक है. अभी देखना ये क्या किया Arsenba ने ये इसने अपने फ्रंट लेग को ये मुआय थाई में भी बहुत सारे लोग करते हैं they not fake but you switch your leg to get that forward momentum okay so यहाँ पे जब Arsenba ने इसको किया पहले I think that was fine. अभी अब देखना he throws a hook ठीक है वो switch करेगा देखना अभी देखा ये switch किया अब ठीक है अब यहाँ पे क्या है why I think it's okay when that Arsenba did it when it was here is because there was a lot of distance between him and Aminder तो he wanted to cover the distance as well. Aminder ने adjust कर लिया Aminder पीछे चला गया बहुत अच्छे तरीके से अपना होमवर्क करके आए हैं अमिंदर. अब he does it again which doesn't make a lot of sense if he's not throwing it because Aminder and him are now not in the same range. अब ये दोनों बहुत ज़्यादा पास में हैं ठीक है. This is not the range from which you should fake it in my opinion. This is the range from where you either throw it or you थोड़ा सा get out back out then but he stays there okay. So Aminder has seen this now twice. He's faking a whatever switch kick to the body, switch kick to the head कुछ भी हो सकता है ठीक है. Aminder is on guard. See, the third time he does it again. ये देखो तीसरी बार वो फिर से करेगा पहली बार तरीके से अपना होमवर्क करके आए हैं अमिंदर. दूसरी बार तीसरी बार करने गया and Aminder had his timing. So it wasn't for a low kick, it was for a switch kick anyway but beautiful finish like beautiful finish and great stoppage thank God like thank God that the referee was able to stop it बहुत जल्दी से but मेरे हिसाब से like this was such a beautiful finish very technical and I think Arsenba sort of underestimated him to a certain extent yeah and he had to pay for it but yeah मेरे हिसाब से this was like the best finish of the year. I'm sure आप सबके पास अपने अपने finishes होंगे and I'm sure everybody has a different pick. Let me know आपके क्या picks हैं and yeah if you like these kind of videos share करो अपने friends के साथ and subscribe to the channel. Alright, see you.